Thank you, Sri Mahanti, for very inspiring and beautiful deliberation. Now I request Dr. Subro Kamal Datto, acclaimed political foreign policy and economic expert, to deliver his address. Namaskar, esteemed panelists in the dais, my friends, some of you are my new friends, but many are my old friends. It is a privilege to come here for this wonderful celebration of IIT Alumni Association. I still remember during the time of the COVID, I had addressed the IIT Alumni Association, but it was online. And today I feel so fortunate and privileged that I'm here among all of you to express my thoughts and to learn from you all. विद्या के केंद्र पे आया हूँ मैं, तो माँ भगवती सरस्वती माँ की वंदना से ही शुरू करता हूँ और बहुत जल्दी ही आईआईटी में और पूरे भारतवर्ष में सरस्वती माँ का एक तरह से स्तुति किया जाएगा और उसके साथ साथ 26 जनवरी को तो सरस्वती पूजा ही है। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी Vidyadhari Namostute. Friends, the topic is so interesting. Individualism, materialism. What have we gained and what have we lost? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस महत्वपूर्ण सवाल को समझने की, सोचने की बहुत आवश्यकता है. This country has been so blessed. This country has been so blessed because this country has given to the whole world the notion of Dhamma, the notion of Satyameva Jayate, the notion of spiritualism, the notion of Vasudhaiva Kutumbakam, and the greatest philosophy of all philosophies, Srimad Bhagavad Gita. ये देश ने पूरी दुनिया को सत्यम भी दिया है, शिवम भी दिया है, सुंदरम भी दिया है. Satyam, which means everything blissful. Shivam, of course, the Almighty Trinity. And Sundaram comes for everything which is ethical, which is pious, and which comes from inside, from deep inside the heart. और इसीलिए इस देश ने और इस देश के तमाम जितने सारे सांस्कृतिक धरोहर हैं उस पे बहुत सारे ऐसे मिसाल है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पूरी दुनिया को दशा और दिशा दिखाया है. When Swami Vivekananda went to United States of America to address the famous Parliament of Religion, he was initially hooted down, he was initially castigated, and he was looked down upon as to who is this saffron-clad fakir who has come from which part of the world, from our land of heathens and barbarians, and he is coming to address us in this Parliament of Religion. When Swamiji entered the Parliament of Religion and when he addressed the Americans as my dear brother and sisters, it was something which was unheard for the people of United States of America. Because US is such a materialistic society, US is such an individualistic society, they never heard the notion of universal brotherhood. They never ever thought that anyone coming from almost 5,000 kilometers away could address them as brother and sister. And there was a standing ovation in the hall. That is where the greatness of this country lies.
That is where the civilizational notion of this country lies. और इसीलिए देवी पुराण में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे नमस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे नमस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। और देवी पुराण में अल्टीमेट वर्णन तो नारी स्तुति की गई है, जो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। उसके सिवा तो कोई भी सिविलाइजेशन अधूरा रहता है। और इसीलिए देवी पुराण में क्या कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपे नमस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। To show the proper direction, to show the path of enlightenment and to show the path of knowledge, the Devi Puran again says, Ya Devi Sarvabhuteshu Dharma Rupe Namastita Namastashvai Namastashvai Namo Namaha। Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhi Rupe Namastita नमस्तस्वै 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 नमो नमः। ये जो डिफरेंस है इंडिविजुअलिज्म और ये जो नोशन है कलेक्टिविज्म का, या फिर विभिन्नता में एकता, ये इसीलिए आता है व्हेन वी अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ धर्मा, and when we understand the philosophy of dharma through our spiritual mind. And that's the reason in Devi Puran there is also dharma, there is also buddhi as such, और उसके साथ साथ इस बुद्धि को सुरक्षित रखने के लिए और इस धर्मा को सुरक्षित रखने के लिए, and this great enlightenment through knowledge, इसको सही दिशा में दर्शाने के लिए ना देवी पुराण में ये भी कहा गया है, सहस्र शस्त्र हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सहस्र शास्त्र Hare Devi Narayani Namostute, which means in 1,000 hands of yours, O Mother Goddess, you have the 1,000 book of knowledge or Shastra as such, and to protect that 1,000 book of knowledge from evils and from opportunistic people and from people who are uncivilized and who are barbarians, you also have this Sahasra Shastra, the weapons to protect that knowledge which you have given to this whole world. This is the essence of India. This is the essence of this ancient country called Bharat. और इसीलिए under the guidance of the Honorable Prime Minister of ours, if we also are talking about Atmanirbharta, and at the same time, if we are talking about, like एक तरह से how to make India a developed country with the notion of, Atmanirbharta, Unnata, at the same time, the government and the Prime Minister always keeps on talking about the Sanskritic Dharohar also, about the ancient philosophy of our country, about the ancient civilization of our country, और इसीलिए हमारे देश के तमाम जितने सारे सांस्कृतिक धरोहर है उन सबको पुनर्जीवित किया जा रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर हो, चाहे वो द्वारकाधीश हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो रामेश्वरम हो, चाहे वो द्वारकापीठ हो, चाहे वो माँ कामाक्षी हो, चाहे वो काली घाट हो, या फिर चाहे वो माता वैष्णो देवी क्यों ना हो। ये जो पूरा सर्किट बन रहा है पूरे भारत में to connect in the Alumini gardens together with Pataliputra as well as with Nalanda, and also to connect Mathura, Ayodhya, Varanasi with Dwarkadhish, with Rameshwaram, with Kedarnath, with Badrinath. This is something which has been done to generate and to regenerate that essence of Vasudhaiva Kutumbakam, that essence of dharma and that essence of philosophy which somehow got diluted in the last 25-30 years of imitation of the globalization process. Globalization के adoption में हम लोग ये भूल गए थे कि हमारे देश की जो धरोहर है वो collective है और वो वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है, and on this
डायरेक्शन ऑफ गोइंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, एक जो होर लगा हुआ है, उसके चलते वी बिकेम एब्सोल्युटली सेल्फ सेंट्रिक, वी बिकेम एब्सोल्युटली इंडिविजुअलिस्टिक। और यही चीज है जो कहीं ना कहीं पे भारत को कहीं ना कहीं पे पतन की तरफ लेके जा रहा है। उस पतन को रोकने के लिए, उस चीज को समाप्त करने के लिए, and to rejuvenate back that ancient philosophy of us, that ancient culture of us, we need to inculcate this thought process among the younger generation, the generation which is there in the schools, the generation which is there in the institutions, and the generations which is there in the 5th standard, 6th standard as such. And what better can be than a premier institution like IIT Delhi? मैं तो कहता हूं कि आप लोग तो विद्या के केंद्र हो, और विद्या के केंद्र होने के नाते ये जो आप लोगों के हाथ पे जो भगवती माँ ने और शिव जी ने जो एक तरह से एक मिशन दिया है, एक टास्क दिया है, उस टास्क को नया जनरेशन के सामने लेके जाना है, ताकि हमारा नया जनरेशन सही दिशा में चले, सही तरह से चले। I give you the example of Iran as such. Iran, with the fall of the Persian civilization, adopted Islamic religion as such, but they never forgot their ancient culture. They never forgot the notion of Nowruz, or the Iranian New Year as such, that they retained. They never forgot about Nishapur, or they never forgot about Persepolis. In Indonesia, when anyone goes from outside, and especially if a person goes from India, a person is welcomed with the notion of Om Saste Nastu. Indonesia is the largest Islamic country of the whole world, but they never forgot that ancient civilizational connect of theirs with India as such. और इसीलिए इंडोनेशिया के अलग अलग जितने सारे राउंड एबर्ट्स है, वहाँ पे भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी है, संकट मोचन की भी प्रतिमा है, और इंडोनेशिया के करेंसी पे भगवान गणेश जी का चिन्ह भी है। ये एक चीज़ है जो हमें, जो पूरे दुनिया को इस देश ने दिया है, ये चीज़ हमारे अंदर दोबारा पुनर्जीवित करना है। When Max Muller came to India, and when all other Western historians came to India, they just got aghast by seeing the wonders of India as such, whether in Dwarkapuri, or whether in Konark, or whether in the banks of Ganges as such. So friends, I would say that this is something which we need to re-inculcate। जाते जाते भारत की एक स्तुति एल बशाम के माध्यम से गा के जाता हूँ आप सबके बीच में। एल बशाम had written a very famous book which has been titled as A Wonder That Is India। और मैं तो कहता हूँ कि India was always a wonder, India is always a wonder, and India will always remain a wonder। And I quote from El Basham, a famous German historian, when he said after coming to India, East bowed before the blast in patient thought disdain, she led the legion's thunder past, bowed in deep thoughts again। इसका मतलब भी समझा देता हूँ। By East it means India bowed before the blast, जितने सारे आक्रांता आए उनके सामने bowed before the blast in patient thought disdain, मतलब कि इस तरह से philosophical mode में bowed before the blast in patient thought disdain, she led the legion's thunder past, bowed in deep thoughts again। आक्रांता आए, इस देश को लूटे, पर लूटने के बाद वही सब आक्रांता हमारे देश के काशी विश्वविद्यालय के सामने, या फिर वाराणसी के सामने, या फिर नालंदा के सामने सर झुका के और हाथ जोड़ के बोले कि हे गुरु, आपने तो पूरे भारत को आपने जीरो दिया है, आपने कैलकुलस दिया है, आपने ट्रिगोनोमेट्री दिया है, हमें भी ये डेसिमल सिस्टम सिखा दीजिए, हमें भी जीरो का अहमियत समझा दीजिए, हमें भी ट्रिगोनोमेट्री का अहमियत समझा दीजिए, एल्जेब्रा का अहमियत समझा दीजिए, और कैलकुलस का अहमियत समझा दिए। और वही सब आक्रांता मिडल ईस्ट से फिर ये सारी चीज़ें यूरोप में लेके गए, और यूरोप से पूरे अमेरिका में गए। जब भारत ने इतना सारा चीज़ें दुनिया को दिया है, और दुनिया को एनलाइटमेंट दिया है नॉलेज का, लाइट का, तो वो चीज़ हमें भारत के अंदर दोबारा पुनर्जीवित करना है और दोबारा प्रकाशित करना है। बधाई देता हूँ मैं IIT एलुमनाई एसोसिएशन को कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण विषय पे आज ये
कॉन्फ्रेंस रखा है। मेरा शत शत नमन है आप सबको कि आप सब ने इतना शानदार चीज़ आयोजित किया है और इतने शानदार ऑडियंस यहाँ पे है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।